Welcome, welcome, dear student. Today we are starting first lecture, computer architecture. It's just an introduction about the basic concept, role of instruction, and there are some small starting MCQ questions for you. This first we have discussing about how the basic कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ये किस तरीके से आपको सीखना है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हम इसका लेआउट आज सेट करते हैं। सबसे पहले पहला हमें जो काम करना है वो ये देखना है कि किस तरीके से आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बनेगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे किन हिस्सों में एक हम इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है ये पहचानना। इसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, ये हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में। अभी जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने ये देखना है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। ये अगर हम ओवरऑल डिस्कशन में बात करें तो एक सिंपल जो हमारा कंप्यूटर है वो आपस में कैसे कोरिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, उसको हमने ग्राफिकली शो करना और इस तरीके से शो करना ताकि एक दूसरे से जो कंपोनेंट है वो टाइटली किस तरह से कपल्ड है। इन चीजों को अगर हम डिस्कस करें या इन चीजों पे हम काम करें तो वो कहलाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मीन दैट इट रेफर टू एन of organization of computer, that how these components are connect together. Now the question arises, which type of component we have in a computer system. Generally, most of user know that computer is made up of the CPU, memory, input device, output device, and bus system. These five components are main part of any computer, and organization represent how they tied together. The first is a CPU, that is Central Processing Unit. एक्चुअली सेंटर जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो कई चीजों से मिलके एक कंबाइंड कंपोनेंट बनाता है, जिसके अंदर तीन चीजें मेन है: एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसका काम है पूरे ओवरऑल फंक्शन, जो भी हमारा एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करना। एएलयू का काम है मैथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना। और मेमोरी जो यूनिट है उसका वर्क है जो भी हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करना। तो इसी पे जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस पे हमने पहला एमसीक्यू लिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो यहाँ हमारे पास जो चार ऑप्शन है, पहला है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर पार्ट, थर्ड है मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोर द डेटा टेम्परेरी। कि जो ये हमारे चार ऑप्शन है इनमें से जो नियर बाई जो हमें आंसर है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर पार्ट। जो जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए कंप्यूटर को क्या करना होता है कि एक इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो ये प्रोग्राम है इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम प्रोग्राम की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्राम की जो जनरल डेफिनेशन है इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट व्हाट इज अ instruction. Suppose that we are going to add two numbers a and b, then we need to write c is equal to a plus b. Here a
A and B and C are the addresses of the memory, and plus is a operation. All two aspects, operator and operands, combine together to make an instruction. So that we can say instruction is a minimum fundamental operations of a computer. Now, after instructions, these instruction will be divided into different parts. First is a mode, second is a opcode, and third is a address. Here, mode is tell about where your data will be placed. Mean that it may be memory or it may be a register. The opcode tell you what actually we want to do by this fundamental operation, that we are going to do addition, subtraction, multiplication, division, whatever we want. That is mean that it is mean that कि बेसिक ऑपरेशन जो हमें करना है उसको उप कोड बताएगा. नेक्स्ट द एड्रेस. एड्रेस इज अ लोकेशन वेयर operands and their result will be stored. Now we have one another MCQ question. Which of the following is not a part of the code, instruction code? As in the earlier topic, we have discussed that an instruction code will be made from three different parts, that is code, mode, and address. Here, two new words we have seen here. First is operand, another is interrupt. We know that opcode and address are we have already discussed. But operands are the basic variables in all in the discussion. In case of instruction code, we have not listened any word of related to the interrupt. So our answer D is a correct answer. That interrupt never part of the instruction code. If we have collected many instructions together, then it is said to be instruction set. Actually, instruction set is the all possible collection of all possible instructions. As the in this MCQ, we have four different options. First, number of cycles to execute instruction. Second, it defines the structure of computer data. C part, perform arithmetical operation of computer only. And the D part, it provides all necessary control to all the hardware. Instruction set is a collection of all instructions, so that our option D is most relevant to our definition. So it is a correct answer. Let's summarize the things. First, in this topic, we have discussed what is computer organization, what is the different components, what is instruction, what is instruction code, and the part of instruction. And we have discussing some MCQ also. In the next topic, we have start more detail about how the instruction will be executed. Thank you.